hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening, good evening, good evening. So, what we have discussed in the last lecture. So, in the last lecture, we have seen drug acting on ANS, and in that also we are discussing the cholinergic drugs or parasympathomimetic drugs or parasympatholytics. Okay, so drug acting on ANS, drug acting on autonomic nervous system. So from that we have already seen adrenergic drugs, which are also known as sympathomimetic drugs. Adrenergic drugs मतलब drug acting on adrenergic nervous system. उसमें दो टाइप आता है. So drug acting on adrenergic nervous system, they are known as adrenergic drug. So in that, adrenomimetic is sympathomimetic, adrenolytic means sympatholytics. So after that, cholinergic drugs. So cholinergic drugs means drug which interact or which has a action in a parasympathetic nervous system. So cholinergics, in that cholinomimetics are there and cholinolytics are there, or parasympathomimetic, parasympatholytic. So in that we have seen what you mean by parasympathomimetics, what do you mean by parasympatholytic. We have seen the acetylcholine synthesis, storage, release. We have seen the receptors of acetylcholine. We have seen the receptors of acetylcholine. After that we have seen their classification of cholinergic drugs. Cholinomimetic का classification देखा है आपने, right? So we have seen the classification, all the classification, तीन टाइप का classification देखा है आपने. I so we have seen the classification. We have also seen the receptors, distribution of receptor. After that we have seen the pharmacology of acetylcholine. After that we have seen the different pharmacological actions of acetylcholine on the different system of your body. So pharmacological actions of acetylcholine we have seen, right? So up to this slide we have seen. Now in the last lecture we have seen the pharmacological actions of acetylcholine. पूरा acetylcholine का अपना हो चुका है, including their pharmacological effects, adverse drug reaction and therapeutic uses. So today we will discuss the synthetic acetylcholine analogs. देखो acetylcholine क्या है? Acetylcholine is a neurotransmitter, naturally occurring neurotransmitter. It is an endogenous neurohormone. So it is a hormone of parasympathetic nervous system. So neurotransmitter of parasympathetic nervous system. So you cannot give acetylcholine orally. If you inject the acetylcholine, most of the acetylcholine is destroyed by pseudocholinesterase. So to get a therapeutic effectiveness of acetylcholine, so synthetic derivative of acetylcholine was derived. So synthetic drugs known as the synthetic choline esters. Synthetic choline esters मतलब acetylcholine क्या है? Acetylcholine is a ester of choline with the acetic acid, right? So synthetic choline esters or synthetic acetylcholine drugs. So derivative of acetylcholine, synthetic derivative. First one is a methacholine. First one is a methacholine or methacholine. So it is a orally effective drug. It is a orally effective because acetylcholine is not effective orally. क्यों नहीं है orally effective acetylcholine? क्योंकि acetylcholine जब अपन लेते हैं orally तो GIT में, GIT के fluids में, acid में destroy हो जाता है. अगर कुछ part blood में जाता है
तो ब्लड में भी क्या है, एक एंजाइम होता है सूडोकोलिनेस्टरेज, तो वो भी उसको मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। सो एसिटिलकोलिन इज नॉट इफेक्टिव ओरली, ठीक है, दैट्स व्हाई देयर एनालॉग्स और देयर सिंथेटिक choline esters has been synthesized. So first one is the methacholine. So orally active, 1/3 of susceptibility for the choline esterase as compared to acetylcholine. तो acetylcholine का मेटाबॉलिज्म जो choline esterase एंजाइम करता है उस, है ना, तो 1/3 susceptibility होता है, मीन्स it will resist the metabolism. So methacholine is not readily metabolized by choline esterase as compared to acetylcholine. So it is a totally resistant to the सूडोकोलिनेस्टरेज, मतलब क्या है कि वह ब्लड में ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा. सो इट हैज अ 1/3 ससेप्टेबिलिटी फॉर ट्रू कोलिनेस्टरेज व्हिच मेटाबोलाइज द एसिटिलकोलिन इन द न्यूरॉन एंड इट इज अ टोटली रेजिस्टेंट टू द सूडोकोलिनेस्टरेज. और इसके ऊपर क्वेश्चन जीपैट 20 में आ चुका है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है. सेकंड ड्रग है कार्बाकोल. सेकंड ड्रग इज अ कार्बाकोल. तो अगेन इट इज अ, वी हैव सीन कार्बाकोल इज अ, इट इज नथिंग बट द ईस्टर, है ना, ईस्टर ऑफ, है ना, ईस्टर ऑफ कोलिन विद द कार्बामिक एसिड, ईस्टर ऑफ कोलिन विद द कार्बामिक एसिड. एंड बिथेनाकोल इज नथिंग बट द, इट इज अ ईस्टर ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन विद द कार्बामिक एसिड. तो कार्बाकोल क्या है, ईस्टर ऑफ कोलिन विद द कार्बामिक एसिड. एसिटिलकोलिन क्या है, ईस्टर ऑफ कोलिन विद द एसिटिक एसिड, ठीक है. तो कार्बाकोल इज आल्सो रेजिस्टेंट. देखो क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो कार्बाकोल इज अ resistant to the true as well as pseudocholinesterase. तो कार्बाकोल क्या है, इट इज अ resistant to the both true as well as pseudocholinesterase. मतलब क्या है, true cholinesterase कहाँ पे होता है, true cholinesterase और acetylcholinesterase present in the neurons and pseudocholinesterase और butyrylcholinesterase present in the plasma, liver, other kidney, etc. तो देखो true cholinesterase or acetylcholinesterase will metabolize the acetylcholine in the neuron and pseudocholinesterase or butyrylcholinesterase will metabolize the acetylcholine in the periphery like blood and other tissues, right? So carbachol is a resistant to the both, it is a resistant to the both true as well as pseudocholinesterase. और यही क्वेश्चन जीपैट 2020 में पूछा है. तो which drug is a resistant to both true as well as pseudocholinesterase, है ना. सो आंसर वाज अ कार्बाकोल, ठीक है. मिथाकोलिन इज आल्सो रेजिस्टेंट टू द सूडोकोलिनेस्टरेज बट इट हैज अ ससेप्टेबल टू द कोलिनेस्टरेज, राइट. नाउ इट एक्ट ऑन अ मस्कर्निक रिसेप्टर ऑन अ स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी. ये कार्बाकोल क्या है, इट विल एक्ट ऑन अ मस्कर्निक एज वेल एज निकोटिनिक रिसेप्टर. इट विल एक्ट ऑन अ मस्कर्निक रिसेप्टर ऑन अ स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी, यूरिनरी ब्लैडर. इट हैज अ सस्टेन्ड मायोसिस बहुत टाइम तक होता है इसका. when used topically, when carbachol is used topically in the eye, there is a sustained meiosis effect. Muscarinic actions of carbachol can be blocked, cannot be adequately blocked by atropine. मतलब atropine is a muscarinic blocker, but the muscarinic action of carbachol cannot be completely blocked by atropine or are not adequately, है ना, carbachol are not adequately antagonized by atropine. तो adequately ये atropine block नहीं करता है carbachol का muscarinic action. Carbachol क्या है, it is a derivative of synthetic derivative of acetylcholine, है ना. So it can act on a muscarinic receptor, nicotinic receptor. Remember. Now bithanacol, ना bithanacol देखो यहाँ पे bithanacol क्या है, ester of, है ना, ester of choline with the carbamic acid. Bithanacol is a ester of beta methyl choline with the carbamic acid. Ester of beta methyl choline with the carbamic acid, है ना. acetylcholine क्या है, ester of choline with the acetic acid, है ना. Then carbachol क्या है, ester of choline with the carbamic acid. And bithanacol क्या है, bithanacol it is a ester of beta methyl choline with the carbamic acid. So again it is a resistant to the, it is also resistant to the both pseudocholinesterase as well as true cholinesterase. ये भी रेजिस्टेंट है एंड इट हैज मेनली मस्कर्निक एक्शन. इसका मस्कर्निक एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मस्कर्निक एक्शन ज़्यादा है एंड निग्लिजिबल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट. मस्कर्निक इफेक्ट कैन बी एंटागोनाइज्ड बाय एट्रोपिन. एट्रोपिन क्या है, एंटी मस्कर्निक है.
it should not be given by intravenous route because of toxicity, and if there is a toxicity of this buthanacol, carbachol, so you have to use atropine. So atropine क्या है? Atropine will reverse the symptoms of these. Now adverse reactions of these drugs, मतलब मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनेकोल, तो एडवर्स रिएक्शन क्या होंगे? सो एडवर्स रिएक्शन आपको इजीली समझ में आना चाहिए, आप खुद से भी एडवर्स रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या होंगे एडवर्स रिएक्शन? तो ऑब्वियसली ये क्या है, दे आर द कोलिनर्जिक, कोलिन ईस्टर्स है, तो ऑब्वियसली एसिटिल कोलिन के जैसे वर्क करेंगे, तो ज्यादा वर्क करेंगे, मतलब क्या, वही एडवर्स इफेक्ट होगा। इट इज ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, सो दैट इज नथिंग बट द एडवर्स इफेक्ट। तो ज्यादा हो गए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो वो एडवर्स इफेक्ट हो गया, राइट। सो दे आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। सो माइनर साइड इफेक्ट्स लाइक जीआईटी डिस्टर्बेंस है, जीआईटी डिस्टर्बेंस मतलब क्या करेगा, तो दे विल इंक्रीज योर पेरिस्टाल्सिस, तो यहाँ पे डायरिया हो जाएगा, आपको वोमिटिंग हो जाएगा, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, फ्लशिंग, है ना, फीलिंग ऑफ वार्म, सलाइवेशन, बहुत ज्यादा सलाइवा सीक्रेट कर देगा, सलाइवेशन, स्वेटिंग, है ना, स्वेटिंग ज्यादा होगा, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा। सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स आर नथिंग बट द हाइपोटेंशन, है ना, सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन, सिंकोप, ब्रोंकोस्पाज्म एंड occasionally can cause cardiac arrhythmia or cardiac arrest. So adverse effects are because of the extension of pharmacological action. जो adverse effect एसिटिलकोलिन के है उसी टाइप के adverse effect इनके भी रहेंगे, because ये भी क्या है, कोलिन, है ना, esters of choline, esters of choline और synthetic choline esters, synthetic choline esters. तो right, next देखो यहाँ पे अपन देखेंगे therapeutic uses of these drugs. इनका यूज क्या है, थेरापेटिक यूजेस क्या है इनकी, थेरापेटिक यूजेस और क्लिनिकल यूजेस ऑफ कोलिन ईस्टर्स और एसिटिलकोलिन के जैसे यूज है उनका, जैसे एसिटिलकोलिन का यूज रहेगा सेम यूज इनका रहेगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बाकोल, बिथेनाकोल, मिथाकोलिन ऑन जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट? जीआईटी के ऊपर, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर क्या रहेगा उनका यूज? ऑब्वियसली देखो यहाँ पे, तो दे आर यूज्ड इन द, है ना, दे आर यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस? आई विल एक्सप्लेन। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ईस्टर्स ऑफ कोलिन, सिंथेटिक ईस्टर्स ऑफ कोलिन? सो दे आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल बिथेनाकोल, so बिथेनाकोल इज यूज्ड इन द, बिथेनाकोल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। मतलब जैसे इफ there is a removal of any part of intestine, तो intestine का स्मूथ मसल का पार्ट रिमूव किया है, what happens due to that surgical intervention, तो your GIT peristalsis stops। अगर आपका GIT peristalsis stop हो गए तो आपका डाइजेशन नहीं होगा। तो what happens after operation in the GIT, after operation in the your gastrointestinal tract, so what happens, there is a paralysis of smooth muscles of your GIT. Now to activate that smooth muscle to continue or to continue again peristalsis, so these drugs are used. So bithinicol, carbachol, they are used to initiate the peristalsis after the paralytic illness, post operative paralytic illness. इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन के बाद में आपका स्मूथ मसल GIT का पैरालाइज हो गया, तो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, आल्सो यूज्ड इन द एब्डोमिनल डिस्टेंशन बिकॉज ऑफ द सर्जरी, ठीक है। नाउ दे आर आल्सो यूज्ड टू रिलीव और टू ओवरकम गैस्ट्रिक अटोनी। गैस्ट्रिक अटोनी मतलब क्या कि आपका स्टमक में स्मूथ मसल में एक टोन रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है, वो अगर गया तो दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक अटोनी। दे आर यूज्ड इन द गैस्ट्रिक अटोनी, दे कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन एंड केसेस ऑफ, सॉरी, दे आर यूज्ड इन द to relieve the gastric atony and cases of urinary retention, है ना। तो आपको मालूम है यूरिन पास कब होता है, योर यूरिन इज पास्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिटिलकोलिन, व्हेन देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटिलकोलिन यू आर नॉट एबल टू पास योर यूरिन, तो यूरिन रिटेंशन विल बी देयर। तो ऑब्वियसली so बिथेनाकोल, कार्बाकोल, मिथाकोलिन, they are used in the cases of urinary retention. They are contraindicated in case of hypothyroidism. अभी ये जो ड्रग है दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ
हाइपोथायराइडिज्म, ब्रोंकियल अस्थमा। क्यों? बिकॉज ब्रोंकियल अस्थमा में ऑलरेडी ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एयरवे कम हो रहा है। सो ये जो ड्रग है कोलिनर्जिक ड्रग्स है, सो दे विल आल्सो decrease airway, they will increase the secretion, so that may be troublesome in the asthma. That's why they are contraindicated in case of bronchial asthma, peptic ulcer, because acetylcholine is one of the stimulus for acid formation. Already peptic ulcer है तो और ज़्यादा acid बनेगा तो ज़्यादा होगा. They are also contraindicated in case of myocardial infection. These are the contraindications. Uses some contra. Now cholinomimetic alkaloids. Second होता है cholinomimetic alkaloid. तो जो आपने देखे कार्बाकोल, पिथेनोल है ना, एसिटिलकोलिन, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग बिकॉज दे डायरेक्टली स्टिमुलेट द ओके. सो एसिटिलकोलिन इज एगोनिस्ट टू द एसिटिलकोलिन इज एगोनिस्ट टू द मस्कार्निक एंड निकोटीन रिसेप्टर. कार्बाकोल, पिथेनोल है ना, मिथाइकोलिन, ऑल दिस आर द सेम. बस सिर्फ फर्क क्या है कि एसिटिलकोलिन इज अ नेचुरल वन, कार्बाकोल, पिथेनोल एंड मिथाइकोलिन दे आर सिंथेटिक कोलिनिस्टर्स, सो दे विल एक्ट इन सिमिलर वे. Now cholinomimetic alkaloids. Now these alkaloids they are not a acetylcholine. They are not having any choline or their synthetic derivative, but they have a cholinomimetic action. Means they will copy the actions that are produced by acetylcholine or that are produced by after the stimulation of parasympathetic nervous system. तो cholinomimetic alkaloid तो पहला है आपका पिलोकार्पिन. कौन सा कार्पिन? पिलोकार्पिन. First one is a pilocarpine. Now, pilocarpine is alkaloid obtained from Pilocarpus jaborandi. We have already seen. So, alkaloid obtained from Pilocarpus jaborandi. So, it will stimulate. It is agonist to the muscarinic and nicotinic receptor. It will directly stimulate the muscarinic as well as nicotinic receptor. So, muscarinic action can be antagonized by atropine. Muscarinic action of pilocarpine can be antagonized by atropine. तो इसका मस्कार्निक एक्शन जो है पिलोकार्पिन का, वो अपन उसको काउंटरएक्ट कर सकते हैं एट्रोपिन से. ओके. पिलोकार्पिन व्हेन यूज्ड, पिलोकार्पिन जब यूज करते हैं सो इट कैन प्रोड्यूस हाइपरटेंशन, एंड टैकीकार्डिया. स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया. It stimulates the sympathetic ganglia and causes the hypertension and tachycardia in the spinal animals. So when pilocarpine is applied topically in the eyes में क्या करता है? In topically in eyes, it produces miosis, transient increase and then sustained fall in the intraocular tension, है ना. मतलब pilocarpine is used in the है ना, it is used in the क्या बोलते हैं उसको, glaucoma. So it is used in the glaucoma. Pilocarpine is used in the glaucoma. Why? Pilocarpine decreases the intraocular tension, decreases the intraocular pressure. Glaucoma में क्या होता है कि glaucoma को अपन हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, कांच बिंदु. मोतियाबिंद जो होता है, कांच बिंदु जो होता है ना. So initially when applied topically in the eyes, pilocarpine initially increases, transiently increases, मतलब short time के लिए increase करता है. After that बहुत टाइम के लिए डिक्रीज करता है. तो सस्टेन्ड रिलीज इन द इंट्राओकुलर टेंशन, दैट्स व्हाई यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. इट कॉजेज द स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन. क्या होता है? इसका एक एग्जांपल इजीली है, मैं बोलता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गए थिएटर में. जब आप थिएटर के बाहर हो तो देयर इज अ ब्राइट लाइट. So outside of theater there is a bright light. When you enters into theater, जब आप थिएटर में एंटर करते हो, when you goes in the talkies, so in the talkies you have dim light. Outside the talkies you have bright light. So when suddenly you come from bright light to the dim light, what happens? Your eyes needs some fraction of seconds to adjust the vision, है ना. जब आप सडनली टॉकीज के बाहर ब्राइट लाइट है और सडनली आप डिम लाइट में जाते हो टॉकीज में, तो क्या होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता. यू बिकम अ ब्लाइंड फॉर अ सेकंड. व्हाई? बिकॉज योर आईज, योर pupil needs to be adjusted for dim light, and it is
it takes some fraction of second. That is known as a spasm of accommodation. But ये बाद में करेक्ट हो जाता है. Then what are the adverse reactions of pilocarpine? तो adverse reaction उसके सेम ही रहेंगे. जैसे ये भी क्या करता है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, so same like cholinesterase, so it can major adverse effect is pulmonary edema. Pulmonary edema is a major adverse effect of pilocarpine. इसके ऊपर आपको नोट करना है, तो आज क्वेश्चन आ सकता है. Pulmonary edema is the major adverse effect of pilocarpine. Then therapeutic use of pilocarpine, इसका यूज क्या है भाई? तो it is used in the combination with the Physostgmine or alone also can be used in the treatment of acute congestive glaucoma. Acute congestive glaucoma to decrease or to relieve the intraocular tension. तो glaucoma में क्या होता है कि in your eyes, so there is a one fluid known as the aqueous humor. There is a one fluid known as the aqueous humor which is secreted. Okay, so if there is an increase in the aqueous humor, so there is increase in the intraocular tension. If there is increase in the aqueous humor, so that leads to glaucoma. So drug which decreases the aqueous humor or drug which increases the flow, right, increases the drainage of aqueous humor, so they are used in the treatment of glaucoma. ग्लाउकोमा में क्या होता है कि आपके आईज में एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर रिलीज बढ़ जाता है, या फिर ड्रेनेज कम हो जाता है. तो जो ड्रग प्रोडक्शन कम करते हैं या फिर उसका रिलीज कम करते हैं या फिर उसका है ना ड्रेनेज बढ़ाते हैं, तो वो यूज किए जाते हैं ग्लाउकोमा. वी आर गोइंग टू सी सेपरेट चैप्टर ऑन ग्लाउकोमा, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा. ठीक है, उसके नोट्स बना के अभी इसके बाद में वही चैप्टर लेंगे. ठीक है, नाउ मस्करिनिक, नेक्स्ट वन इज अ मस्करिन, है ना. एंड दिस पिलोकार्पिन इज ओनली टॉपिकली यूज्ड, इट इज नो सिस्टमिकली यूज. पिलोकार्पिन कोई सिस्टमिकली यूज नहीं किया जाता, इट इज नॉट यूज्ड systemically because it is a too toxic for systemic use. So it is only used in the eyes topically. eyes में topically use किया जाता है pilocarpine, mostly used for the glaucoma, that's it, है ना. glaucoma ही इसका यूज है, बाकी कोई यूज नहीं है, used in the glaucoma, right. Next one is a muscarine and arecolin. Antacolin, arecolin, muscarine and arecolin. So what is a muscarine? Muscarine again is a alkaloid. Muscarine again is a alkaloid obtained from mushroom. Obtained from mushroom. Muscarine is a alkaloid obtained from mushroom. Muscarine क्या है? Again alkaloid obtained from mushroom known as a Amanita muscaria. So it is a poisonous mushroom. पॉइजनस मशरूम होता है. आजकल है ना बहुत है ना, जस्ट यू पीपल, लॉट ऑफ पीपल दे आर, है ना, दे आर, उनको लगता है कि ये फैंसी है, मतलब उनको लगता है कि ये कुछ फैशन है, सो मशरूम खा रहे हैं. मशरूम है ना, मतलब इतना अच्छा खाना है अपने पास, है ना. गेहूं की रोटी है ना, बाजरा है, ज्वार है, मक्के है ना. उसके बाद में इतने सारे फ्रूट्स है, इतने सारे वेजिटेबल्स है जिसमें सब कुछ मिलता है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सब, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, लिपिड्स वगैरह. स्टिल आपको क्या है कि मशरूम खाने की खुजली होती है, तो मशरूम खाने की खुजली होती है. और कभी कभी क्या होता है कि कुछ मशरूम जो है ना, मोस्ट ऑफ द मशरूम दे आर नॉट पॉइजनस, बट सम वैरायटी ऑफ मशरूम दे आर पॉइजनस. वो मशरूम खाने की वजह से क्या होता है, पॉइजनिंग होती है, और फूड पॉइजनिंग होती है, मर जाते हैं. तो वन ऑफ द पॉइजनस मशरूम इज नथिंग बट द अमानेटा मस्केरिया. ये पॉइजनस मशरूम का नाम है, अमानेटा मशरूम इज नथिंग बट द अमानेटा मस्केरिया. दिस इज अ पॉइजनस मशरूम एंड पॉइजनिंग ऑफ दिस मशरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका अगर पॉइजनिंग अगर हो गया आपको तो क्या होता है, देयर इज अ डायरिया, देयर इज अ डिसएपनिया. डिसएपनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, डिसएपनिया मतलब डिक्रीज इन द वेंटिलेशन. देन एब्डोमिनल पेन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, वीकनेस, कंफ्यूजन,
कन्वर्जेंस, कोमा, ये सब क्या है? These are the symptoms of muscarine poisoning. Muscarine is alkaloid from Amanita muscaria, which is a toxic or which is a poisonous mushroom. Now, ये जो एक्शंस है, डायरिया, डिसएपनिया, एब्डोमिनल पेन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, वीकनेस, कंफ्यूजन, कन्वर्जन, so all the actions are also seen with the acetylcholine. अगर एसिटिलकोलिन ज्यादा हो गए तो वही सिम्टम आएंगे आपको, राइट? सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसमें जो अल्कोलॉइड है मस्करीन, तो ये मस्करीन एसिटिलकोलिन के जैसे एक्ट करता है और ये इंटरेक्ट करता है एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर से, तो उन्होंने उनका रिसेप्टर का नाम दिया मस्करनिक रिसेप्टर. सो मस्करनिक रिसेप्टर, द नेम ऑफ मस्करनिक रिसेप्टर केम फ्रॉम दिस. तो ए पॉइजनस मशरूम मस्करीन, alkaloid form poisonous mushroom muscarine that interact with the receptor and produces the similar actions as that of the acetylcholine, and that receptor is named as a muscarinic receptor, right? So so now the actions of muscarine can be reversed or can be blocked or can be antagonized by large dose of atropine. So जो मस्करीन के एक्शंस है, they can be reversed, they can be blocked, they can be stopped, by the atropine, large dose of atropine. Right? That's why atropine is a muscarinic antagonist. Muscarine is a muscarinic agonist. Acetylcholine is a muscarinic agonist. Carbachol, bithanacol, they are the muscarinic agonist. But atropine is a muscarinic antagonist. Now another alkaloid is there known as arecholine. कौन-सा choline? Arecholine. Another alkaloid is there known as arecholine. So alkaloid obtained from areca nut. Areca nut ना मतलब क्या? पान सुपारी, बोलो जुबा केसरी ना, विमल बोलो जुबा केसरी, वो जो है ना पान सुपारी. तो arecholine is alkaloid obtained from areca nut, so which has a cholinomimetic actions. मतलब acetylcholine के जैसे एक्शन दिखाता है, but it is not therapeutically useful. It is not used therapeutically. No value in humans as far as therapeutic use of arecholine is concerned. नाउ ये कहाँ पे आता है? एरेका नट. एरेका नट को अपन बोलते हैं बेटल नट. बेटल नट मतलब क्या? पान सुपारी ना, विमल बोलो जुबा केसरी. सो इट हैज अ माइल्ड यूफोरिक इफेक्ट. ये थोड़ा सा सेक्सुअल स्टिमुलेंट भी होता है, माइल्ड यूफोरिक इफेक्ट. तभी तो राजा महाराजा पान सुपारी खाते थे. और आजकल क्या अपने इंडिया में जो कोबरा आता है, मतलब ये ह्यूमन कोबरा है जो पिचकारी मारता है. तो विमल बोलो जुबा केसरी, उसमें एरेका नट होता है, उसमें एरेकोलिन होता है. सो इट इज अ साइलोगॉग. जब आप सुपारी खाते हो तो आपका सलाइवेशन होता है. क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ कोलिनर्जिक, है ना. है ना. जब आप सुपारी खाते हो तो आपका जीआईटी सिक्रीशन बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? बिकॉज इट इज अ कोलिनर्जिक, राइट. सो मस्करीन एंड एरेकोलिन, सो दीज आर द alkaloids which are known as parasympathomimetic or cholinomimetic alkaloids. Now next is now this is the structure of acetylcholine. ये क्या है? acetylcholine है. This is the structure of acetylcholine, right? ये acetyl ग्रुप है ना, CH3COO. ये क्या है? acetyl ग्रुप. This is the acetyl group. Then this is a methylene bridge, and this one is a quaternary ammonium. Quaternary amine. Right. Now this acetylcholine molecule interact with the muscarinic receptor. ये क्या है? नीचे वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, that is a muscarinic receptor. This one is a muscarinic receptor. So acetylcholine interact with the muscarinic receptor via two side. ठीक है. तो acetylcholine में क्या है? It is a ester. देखो CH3COO is a ester. So ester group or acetyl group. Ester group. Then alkylamine chain. CH2CH2N. This one is a cationic head or quaternary head. Now सो उसके अपोजिट, दिस इज अ फीचर ऑफ एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन में ईस्टर ग्रुप है, अल्कलामाइन चेन है, कैटोनिक हेड है. तो कैटोनिक हेड के लिए
On a receptor, on a muscarinic receptor, you have two sides. On a muscarinic receptor, you have two sides. So first side is the anionic side. So anionic side which bears a negative charge, and this one is a cationic head. So it bears a positive charge. Positive will interact with the negative. So remember cationic head or quaternary amine of the acetylcholine. Cationic head or quaternary amine with the quaternary ammonium and a quaternary amine of acetylcholine will interact with the anionic side. Then the ester group will interact with the esteratic side on the muscarinic receptor. Muscarinic receptor के ऊपर sides होते हैं esteratic side and anionic side. At anionic side, quaternary ammonium or cationic head of acetylcholine will interact, and at esteratic side, ester function of acetylcholine will interact. And this alkyl chain interact with the receptor via hydrophobic interaction. तो ये interaction होता है. Now we'll see next. So we have seen the directly acting drug. Directly acting drug में क्या था? acetylcholine था, Carbachol, bithanacol है ना, उसके बाद pilocarpine, उसके बाद muscarine, उसके बाद arecoline. So they were the directly acting drug. Now indirectly acting drug. कौन है indirectly acting? These are known as a cholinesterase inhibitor. Cholinesterase inhibitor. क्या नाम है भाई? Cholinesterase inhibitor. Cholinesterase inhibitor means what? So they will inhibit the enzyme cholinesterase. So what is the role of cholinesterase? So that will metabolize the acetylcholine. तो acetylcholine का मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम है cholinesterase. तो उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग है cholinesterase inhibitor. तो उसको इनहिबिट करने के बाद में क्या होगा? So if there is inhibition of cholinesterase, so what will happen? There is more acetylcholine, and ultimately cholinergic actions. So that's why they are known as indirectly acting. They will not stimulate acetylcholine receptor, or they will not serve as a precursor for acetylcholine. So, but they will increase the acetylcholine level by inhibiting their metabolism. That's why indirectly acting drugs. So cholinesterase inhibitor दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है irreversible. So there are two type of cholinesterase inhibitors. The first one is a reversible cholinesterase inhibitor. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, reversible cholinesterase inhibitor, and second one is irreversible cholinesterase inhibitor. Now reversible cholinesterase मतलब क्या? So you can reverse the cholinesterase inhibition. कैसे? So they are the competitive inhibitor of cholinesterase. So just by increasing the acetylcholine level, just by increasing the antagonist, you can regenerate the cholinesterase enzyme by using their antagonist. So and irreversible मतलब you cannot regenerate the enzyme by giving antagonist. So reversible cholinesterase inhibitors. Reversible cholinesterase inhibitor, in that you have again two type. So naturally occurring and synthetic. Natural reversible cholinesterase inhibitor is a Physostgmine. It is a alkaloid obtained from Physostigma. तो Physostgmine क्या है? Naturally occurring reversible cholinesterase inhibitor. ठीक है. Synthetic reversible cholinesterase inhibitor. तो इसमें आता है neostigmine, pyridostigmine, then ammonium, neostigmine, pyridostigmine, ammonium, androphonium, rivastigmine, donepezil, galantamine, and DMER and tacrine. So donepezil, galantamine, tacrine, DMER, androphonium, and ammonium, neostigmine, pyridostigmine. They are the synthetic one. ठीक है. तो ये सिंथेटिक. सेकंड क्लास क्या है? irreversible में आपको याद रखना है, in case of irreversible acetylcholinesterase inhibitor or irreversible cholinesterase inhibitor, so all they are the pesticides.
तो एग्जांपल इज नथिंग बट द, यहाँ पे एग्जांपल देखो, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है ना, मींस DFP, देन ऑक्टामिथाइल पायरोफॉस्फेट फॉस्फेटरामाइड और ऑक्टामिथाइल पायरोफॉस्फोटेरामाइड है ना, देन अदर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड लाइक मेलाथायोन पैराथायोन हो गए, दे आर द पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या है, पेस्टिसाइड्स है ना, आपको आपके ऊपर जो स्प्रे करते हो टू कंट्रोल द पेस्ट, दे आर द पेस्टिसाइड. तो रिमेंबर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड एंड कार्बामेट कंपाउंड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पेस्टिसाइड्स, दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोलिनेस्टरेज, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल वाले कौन है, Physostgmine and other synthetic, ठीक है. Now mechanism of action of this drug, how this drug they will act as a है ना inhibitor of cholinesterase. तो acetylcholine जो है, acetylcholine is a metabolized by or inactivated by cholinesterase enzyme by combining with the anionic site which bears है ना, which bears a negative charge and which attract that क्वाटरनरी नाइट्रोजन. तो जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है उसमें है ना एनानिक साइट होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, जो दैट विल अट्रैक्ट द क्वाटरनरी नाइट्रोजन, एंड स्टेरेटिक साइट होता है जैसे मैंने दिखाया आपको, सो व्हिच विल अट्रैक्ट द COH ग्रुप ऑफ एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल. नाउ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज क्या करते हैं, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज दे हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू द एसिटिलकोलिन, they are structure similar to the acetylcholine, therefore they compete with the acetylcholine and they are capable of combining with the both side of cholinesterase enzyme. cholinesterase enzyme होता है, इनके दोनों साइड के ऊपर ये कंबाइन होते एंड इनहिबिट करते. right? Now the complex formed by reversible cholinesterase at the static site, you know, the complex formed by reversible anticholinesterase at ester site is much less readily hydrolyzed than acetylostatic site. जो ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज जो है, दे विल कंबाइन एट द बोथ एस्टेरेटिक साइट एंड अनानिक साइट. तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम में दो साइट होता है, अनानिक साइट एंड एस्टेरेटिक साइट. तो एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल में दो फंक्शन है, ईस्टर फंक्शन एंड क्वाटरनरी. सो क्वाटरनरी अमोनियम इंटरेक्ट विद द एनानिक साइड ऑफ योर एंजाइम एंड ईस्टरेटिक और ईस्टर ग्रुप इंटरेक्ट विद द एस्टेरेटिक साइड. राइट नाउ reversible anticholinesterase has a structural similarity with the acetylcholine and they will combine with the cholinesterase enzyme at the both side. Now at the estratic site the complex is not readily hydrolyzed, वो थोड़ा सा slowly hydrolyzed होता है, that's why it causes the temporary inhibition of enzyme, but the complex at a anionic site is readily hydrolyzed. So because of the slow hydrolysis at a static site by this reversible anticholinesterase, it produces the temporary inhibition of enzyme, and that's why known as a reversible. But irreversible, that's why reversible anticholinesterase. Now in contrast, जो irreversible anticholinesterase होता है, in contrast to reversible, तो है ना, in contrast to other reversible anticholinesterase, तो बाकी anticholinesterase जैसे कौन से, जैसे यहाँ पे Physostgmine, Neostigmine, Pyridostigmine, Ammonium, Rivastigmine, Donepezil, Galantamine. So amongst the reversible anticholinesterase, so the Androphonium, जो Androphonium है ड्रग, Androphonium forms a reversible complex only at a anionic site. Androphonium जो है वो सिर्फ anionic site के ऊपर ही complex बनाता है, it will not interact with the static site, and that's why Androphonium, the duration of action of androphonium is very short. So, duration of action of androphonium is short, and that's why remember this is a drug. Androphonium is used in a diagnosis of myasthenia gravis. Diagnosis of myasthenia gravis. This is a drug used in the diagnosis of myasthenia gravis. Myasthenia gravis में diagnosis के लिए ये drug use किया जाता है. So diagnosis of myasthenia gravis is done by
एंड्रोफोनियम because it is a short acting reversible it is a short acting reversible anticholinesterase, है ना. तो क्या होता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में जो स्केलेटल मसल्स है वो वीक हो जाते हैं. तो देर इज अ degeneration of cholinergic neuron at a neuromuscular junction. Because of that there is a weakening of skeletal muscle. वो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है. And to diagnose that, एंड्रोफोनियम is a drug which is a, है ना, which is a reversible short acting inhibitor of cholinesterase. उसको, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए इनहिबिट किया cholinesterase, तो कोलिन एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे सडनली स्ट्रेंथ आता है उसके मसल में. मतलब पहले मसल भी के शॉर्ट में एंड्रोफोनियम दे दिया, मसल में स्ट्रेंथ आ गया, उसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस. दैट्स व्हाई एंड्रोफोनियम इज यूज्ड टू डायग्नोज द माइस्थेनिया ग्रेविस. इसके ऊपर कम से कम 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज. इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज क्या होता है? तो एज आई टोल्ड यू, दे आर नथिंग बट द पेस्टिसाइड्स. इरिवर्सिबल, दे इनहिबिट द एसिटिलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम irreversibly, है ना. So compounds are nothing but the organophosphate compound. They combine only at a stereotic site. They combine only at a stereotic site of, stereotic site of cholinesterase, है ना. Organophosphate compounds or pesticides combine with the stereotic site only with the cholinesterase enzyme, and consequently the site is phosphorylated. और वो ना, मतलब ये organophosphate compounds और पेस्टिसाइड्स क्या करेंगे? दे कंबाइन विद द स्टेरेटिक साइट ऑफ एंजाइम, स्टेरेटिक साइट ऑफ एंजाइम, एंड दे इनहिबिट irreversibly. They combine with the steretic site of cholinesterase enzyme and inhibit the enzyme irreversibly by phosphorylating the steretic site. ये जो steretic site है उसको phosphorylate कर देती है ना. And the hydrolysis of this phosphorylated steretic site, the hydrolysis or the dissolution of this phosphorylated site is very slow, and in most of the cases does not occur, and that's why the inhibition is irreversible. Inhibition is irreversible. Amongst the organophosphate compound, ecothiopate ये जो pesticide है, that forms a complex with the both side, and which is that's why it is the most potent, है ना, irreversible inhibitor of cholinesterase, है ना. तो ये irreversible inhibitor है ना. तो रिवर्सिबल इनहिबिटर कौन सा है भाई? है ना, रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है फाइसोस्टिग्माइन, देन नियोस्टिग्माइन, पेरिडोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, ठीक है, देन टैक्रिन, देन एंड्रोफोनियम. दे आर द रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज. क्वेश्चन आते ही आते हैं उसके ऊपर. एंड इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज होता है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स, मेलाथायोन, पैराथायोन, इकोथायोपेट, डायपायरोफॉस्फेट, है ना, ये सब. नाउ इंडिविजुअल रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज. इंडिविजुअल रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज देखो, इंडिविजुअली पहला ड्रग कौन सा है आपका? फाइसोस्टिग्माइन. तो फर्स्ट ड्रग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज फाइसोस्टिग्माइन, आल्सो नोन एज इसेरिन. इसके ऊपर नाइपर में क्वेश्चन आता है. फाइसोस्टिग्माइन इज आल्सो नोन एज इसेरिन. सो व्हाट इज दैट? इट इज अल्कोलाइड. कहाँ से आता है? इट इज अल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइसोस्टिग्मा. We have already seen in the cognostic Physostgmine venereosum, and it has a similar actions to that of the parasympathomimotic drug. क्योंकि ये क्या करता है? So it will inhibit the acetylcholinesterase enzyme and will increase the level of acetylcholine. So acetylcholine अपना काम करेगा and action दिखाएगा. तो वही तो इसके भी actions हैं. So the pharmacological actions of Physostgmine is similar to the acetylcholine. When topically it is used in the eyes. Topically जब eyes में use करते हैं, when this Physostgmine is used topically into the eyes, causes the miosis, spasm of accommodation, and decrease in the intraocular tension, and that's why again it is used in the glaucoma. Apart from this use in the eye, it is readily safe in the treatment of atropine intoxication, है ना. अभी देखो atropine क्या है? Atropine is a
एट्रोपिन इज अ एंटी कोलिनर्जिक, इट इज अ मस्कर्निक ब्लॉकर, है ना। और ये क्या है, फाइसोस्टिग्माइन इज अ कोलिनर्जिक स्टिमुलेंट, ये कोलिनर्जिक ड्रग है और ये एंटी कोलिनर्जिक है। So that's why in case of atropine poisoning, atropine intoxication, physostigmine is a drug of choice. Physostigmine is a antidote. Physostigmine is a antidote for atropine intoxication or atropine poisoning. And in case of atropine poisoning, atropine poisoning में क्या है, physostigmine is a antidote. And in case of physostigmine poisoning, atropine is antidote. They are the antidote for each other. They are the antidote for each other. Okay. So physostigmine can be used in the atropine poisoning, phenothiazine and tricyclic antidepressant poisoning. Phenothiazine poisoning में भी, tricyclic antidepressant की poisoning में भी ये यूज कर सकते, कौन, physostigmine. नेक्स्ट ड्रग है नियोस्टिग्माइन. नियोस्टिग्माइन, physostigmine क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है अल्कलॉइड, इट इज अ सिंथेटिक. So synthetic quaternary ammonium compound inhibit both cholinesterase, inhibit the true cholinesterase as well as pseudocholinesterase. In addition, it stimulates the organ innervated by cholinergic stim. ये apart from inhibition of cholinesterase, it stimulates the organ innervated by cholinergic stim. Then actions on a GIT, ये दोनों के एक्शन on GIT. तो obviously क्या करेंगे, एसिटिलकोलिन का ही काम करते हैं ना, ये एसिटिलकोलिन के ही बंदे हैं ना, क्या करेंगे, इंक्रीज इन द पेरिस्टालसिस, इंक्रीज इन द टोन एंड मोटिलिटी ऑफ GIT इंटेस्टाइन, सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड प्रमोट द पेरिस्टालसिस. तो एसिटिलकोलिन के एक बंधु है. एसिटिलकोलिन को मतलब क्या होता है, कार्यकर्ता. आजकल अभी माहौल है अपना इलेक्शन का, तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है. तो बीजेपी की कार्यकर्ता अगर है तो बीजेपी का ही काम करेंगे ना. अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो वो कांग्रेस का काम करेंगे. कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का काम क्यों करेंगे? हाँ, कर भी सकते हैं, कब, जब उन्होंने पक्ष बदल लिया था, है ना. लेकिन जब तक पक्ष में है तब तक वो उनका ही काम करेंगे. तो जैसे नियोस्टिग्माइन, पेरिडोस्टिग्माइन क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स. तो वो एसिटिलकोलिन के ही एक्शन दिखाएंगे, राइट. आर यू गेटिंग, यस और नो, है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है. तो नेक्स्ट इज अ एक्शन ऑन अ स्केलेटल मसल. देखो स्केलेटल मसल के ऊपर क्या एक्शन है इनके, स्केलेटल मसल के ऊपर क्या एक्शन. तो दीज रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, दे इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मसल contraction in the patient with the myasthenia gravis. They increases the strength of muscle contraction in the patient with the myasthenia gravis by its anti-cholinergic cholinesterase activity. So they increases the strength of muscle contraction in the patient with the myasthenia gravis because of their anti-cholinesterase activity. Because of their anti-cholinesterase activity. Strength, muscle strength. They will increase the muscle strength, muscle contractions in the patient with the myasthenia gravis. Myasthenia gravis क्या होता है? It is a decreased strength of muscles, skeletal muscles. तो देखो, they release and directly, okay, because of the inhibition of this cholinesterase, increasing the amount of acetylcholine and also directly stimulate the cholinesterase receptor site. कार्डियोवास्कुलर एक्शन क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर? तो ऑब्वियसली ये सप्रेस करेगा हार्ट को. सो व्हाट विल हैव, रिडक्शन इन द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्रैडिकार्डिया, है ना, डिक्रीज हार्ट रेट. एंड डिफरेंट ग्लैंड्स जो होते हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जितने भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स है, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, सबका सिक्रेशन बढ़ाएगा, है ना. मतलब माँ का, भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदलाएगा तेरा फैजल. तो वैसे ही मतलब ये सलाइवरी सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, है ना, पर्सपिरेशन, सलाइवरी सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन,
इंटेस्टिनल जूस सिक्रेशन, यूरिन, प्यूरिन सब बढ़ा देगा। कौन? एसिटिलकोलिन और उसके चमचे। एसिटिलकोलिन का चमचा कौन है भाई? तो एसिटिलकोलिन का चमचा है अपना ये फाइसोस्टिग्माइन, है ना, उसका चमचा है नियोस्टिग्माइन, अम्मोनियम, एंड्रोपोनियम, ये सब क्या है? एसिटिलकोलिन के चमचे है। जैसा, है ना, है ना, साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, जैसे कार्यकर्ता होता है बीजेपी का, है ना, साहब को आगे कर दे हम तुम्हारे पीछे है वैसा है ना। देन अनदर ड्रग इज देयर, सो दे कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, ना, डिजिस्टिग्माइन, it is a long acting neostigmine analog. Digistigmine is a longer acting analog of neostigmine. Now next one is a pyridostigmine. Pyridostigmine ये क्या है? सिमिलर ड्रग है लाइक neostigmine and it has a longer duration of action but less potent. अम्मोनियम क्या है? अम्मोनियम is another drug, reversible anticholinesterase, bisymmetrical and it is a synthetic quaternary ammonium compound. It is more potent than neostigmine. Demarcarium. So two neostigmine molecule joined by 10 methox group. ये क्या है? demarcarium, है ना, टू neostigmine molecule, दो neostigmine का molecule join करके बनाया by joining with the 10 methox group. It inhibit the true cholinesterase more specifically than the pseudocholinesterase. ये true cholinesterase को ज्यादा इम्प्लीट करता है. It is a potent mitotic, मायोसिस करेगा when instilled into the eyes. पोटेंट माइटोटिक है, माइटोटिक मतलब माइटोटिक नहीं, मायोसिस इज अ पोटेंट मियोसिस, इज अ पोटेंट मियोसिस, ये मियोसिस होता है ना, पोटेंट मियोटिक है, मियोटिक मतलब आपको पिपल साइज ये कम कर देगा. तो पोटेंट मियोटिक when used in the eyes. Then next is nothing but the एंड्रोफोनियम. एंड्रोफोनियम इंपॉर्टेंट है आपका, फोनियम, एंड्रोफोनियम. तो एंड्रोफोनियम क्या है? अगेन रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज और रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द neostigmine and has a weak anticholinesterase activity, but it increases the neuromuscular transmission at a low dose that is having very low effect on a smooth muscle of myocardium and glands. तो एंड्रोफोनियम क्या है कि स्केलेटल मसल के ऊपर ज़्यादा एक्ट करता है एंड मायोकार्डियम के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा है. तो यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. इस क्या है? ये क्या है? इज अ शॉर्ट एक्टिंग, और ये शॉर्ट एक्टिंग होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा, ड्रग यूज्ड इन द माइस्थेनिया ग्रेविस. विल सी आफ्टर दैट, इसके बाद में वही देखेंगे. Now adverse reactions of these drug, adverse reaction क्या होंगे? जो एसिटिलकोलिन के एक्शन है that is also due to the extension, they are mostly due to the muscarinic effect की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल epigastric pain मतलब आपके स्टमक में पेन हो रहा है. क्यों हो रहा है? epigastric pain due to the increased peristalsis, increased smooth muscle contractions, epigastric pain. ठीक है. सलाइवेशन, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, पैरास्थेशिया, तो ज़्यादा सलाइवेशन होगा, है ना, ज़्यादा स्वेटिंग होगा, लैक्रिमेशन होगा. पैरास्थेशिया मतलब नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज, सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, क्योंकि आपका जो ब्रोंका है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा. नोशिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, फेसिकुलेशंस अराउंड द माउथ. यूज क्या है इनका? यूज ऑफ दीज ड्रग्स, यूज ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. जैसे आपका pyridostigmine, neostigmine है. pyridostigmine is longer acting. pyridostigmine, neostigmine, galantamine, tacarine, they are used in the treatment of myasthenia gravis. Whereas your endrophonium is used in the diagnosis. They may cause cholinergic crisis, that is a paralysis of skeletal muscle due to persistent depolarization. ये ड्रग कंटिन्यूस यूज करेंगे तो पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल कर सकते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन. नाउ थेरापेटिक यूज ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स. यहाँ पे देखो थेरापेटिक यूजेस एक बार फिर से, दे आर यूज्ड ना. थेरापेटिक यूज ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, जैसे आपका
pyridostigmine, physostigmine, neostigmine, endrophonium, galantamine, tacarine, donepezil, they all are used in the treatment of glaucoma. So glaucoma में physostigmine, dimercurium, they are used in the glaucoma to decrease the intraocular tension. Then decurarization मतलब क्या, decurarization, curare alkaloids जो होते हैं, curare alkaloids. So following the use of drug detuberculin. So detuberculin is a muscle relaxant. It is a skeletal muscle relaxant. इसके बाद में वो चैप्टर भी देखने वाले. So detuberculin is a skeletal muscle relaxant, and to decurarize the it causes paralysis of skeletal muscle. To decurarize the decurarize और curare alkaloids के रिलीव करने के लिए भी ये ड्रग यूज किए जाते हैं, है ना. Decurarization following the use of detuberculin in the anesthetic procedure. Third one is a myasthenia gravis. Third use क्या है, myasthenia gravis. Myasthenia gravis क्या है? It is a autoimmune disease caused by deficiency of post-synaptic neuromuscular acetylcholine complex, है ना. मतलब क्या, जो acetylcholine रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है वो नहीं बनता है इसमें. So myasthenia gravis is an autoimmune disease caused by deficiency of post-synaptic neuromuscular acetylcholine receptor complex. So acetylcholine receptor acetylcholine receptor that is involved in the muscle are reduced up to 70 to 90%. तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है रिसेप्टर एंड कॉम्प्लेक्स acetylcholine, वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है इसमें 70-90% इन द myasthenia gravis. myasthenia gravis is characterized by, कैरेक्टराइज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इजी फटीगेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल, प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ स्ट्रेटेड मसल एंड इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ एक्सर्बेशन, इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ एक्सर्बेशन. सो ये माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स. सो अनदर माइस्थेनिक सिंड्रोम, ये और भी एक माइस्थेनिया ग्रेविस इसका सिंड्रोम है. Another myasthenic syndrome known as a Lambert-Eaton syndrome. Lambert-Eaton syndrome is also autoimmune disease. In nature, occurs in a association with a small cell carcinoma lungs. The antibodies are directed to a calcium channels in the neuromuscular. तो ये autoimmune disease है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी एंटीजन ट्रीट करके ये कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो माइस्थेनिया ग्रेविस, अनदर माइस्थेनिक सिंड्रोम. तो एंड्रोफोनियम इज अ ड्रग यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. तो व्हेन एंड्रोफोनियम इज माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल है कि एसिटिलकोलिन जब रिसेप्टर के साथ में कंबाइन होता है उसके बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है. तो एसिटिलकोलिन कंबाइंस विद द combines with the nicotinic receptor or skeletal muscle, and there is a muscle contraction at the neuromuscular junction, right? Now in the myasthenia gravis there is a reduction or decrease in that complex, 70 to 90% acetylcholine receptor complex is decreased. So due to that there is a weakening of muscle में strength नहीं रहता, muscle में fatigability रहता है, right? Now है ना, एंड्रोफोनियम क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज. सो मोर एसिटिलकोलिन विल बी अवेलेबल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ एसिटिलकोलिनेस्टेज. सो देयर इज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल फॉर शॉर्ट टाइम. एंड्रोफोनियम विल स्ट्रेंथन द मसल फॉर शॉर्ट टाइम. अभी पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर कोई बंदा है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसका मसल बहुत ही वीक होगा. जब उसको पहला एंड्रोफोनियम का डोज दे तो उसके मसल में स्ट्रेंथ आती है ना. इसका मतलब क्या है कि वो ही सफरिंग फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस. तो दैट्स व्हाई एंड्रोफोनियम एज इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज आल्सो देयर. सो शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज, so used in the diagnosis of myasthenia gravis, known as a amyloreactive test. Amyloreactive test. This is known as a amyloreactive test. This is known as a amyloreactive test. So what the amyloreactive test? So it is known as a amyloreactive test. इसको क्या बोलते हैं, amyloreactive test. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, that's why I am repeating it again.
देखो, एंट्रोफोनियम is used in the diagnosis of myasthenia gravis. This test is known as a amelorative test. Amelorative test. ठीक है. Now another test is there. Another test is there known as a provocative test. Another test है known as a provocative test. Another test is there known as a provocative test. In that test you have to use D-tuberculin. तो उसमें D-tuberculin यूज करके D-tuberculin यूज करते हैं उसमें, है ना. D-tuberculin is used again, है ना, in that test known as a provocative test. और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो एंट्रोफोनियम is used in the amelorative test in the diagnosis of myasthenia gravis. और D-tuberculin जिसमें यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं provocative test. Ameliorative test मतलब क्या? So when एंट्रोफोनियम is used, it will increase the strength. That's why it will ameliorate. That's why ameliorative test. Now provocative test मतलब क्या? D-tuberculin क्या है? It will block the neuromuscular junction. It will paralyze the muscle. तो जब D-tuberculin देते हैं तो ऑलरेडी मास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट का स्ट्रेंथ कम है, और D-tuberculin देने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम होता है स्ट्रेंथ. इट इज नोन एज अ प्रोवोकेटिव टेस्ट. उसको प्रोवोक कर रहे हो आप इधर से. सो ameliorative test and provocative test. I hope you have understood these two tests, because इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Remember, D-tuberculin based test is known as a provocative test and एंड्रोफोनियम बेस्ड टेस्ट इज नोन एज अमेलोरेटिव टेस्ट. अमेलोरेटिव टेस्ट एंड प्रोवोकेटिव टेस्ट, ये दोनों टेस्ट याद रखना है आपको. ठीक है, अमेलोरेटिव टेस्ट एंड प्रोवोकेटिव टेस्ट. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. ठीक है, एंड्रोफोनियम इज यूज्ड इन द अमेलोरेटिव टेस्ट and D-tuberculin is used in the provocative test in the diagnosis of myasthenia gravis. तो myasthenia gravis के लिए दो diagnostic टेस्ट है, यहाँ पे याद रखना है आपको. To diagnose the myasthenia gravis, there are two tests. First one is the ameliorative test known as the endorphin based test, and second one is a provocative test known as a D-tuberculin based test. ठीक है, D-tuberculin based test. Now we'll see the next point. अभी देखेंगे नेक्स्ट क्या है ना. अगेन उसमें यूज में ही देखो. ओके, नाउ डेमोस्ट्रेशन है ना, डेमोस्ट्रेशन ऑफ NR एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा मसल बायोप्सी इसमें ना. अगेन थर्ड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट टू डायग्नोज द myasthenia gravis. थर्ड टेस्ट to diagnose the myasthenia gravis. पहला टेस्ट कौन सा है? अमेलोरेटिव टेस्ट, दैट इज यूज्ड इन द दैट यूजेस द एंड्रोफोनियम. सेकंड टेस्ट कौन सा है? सेकंड टेस्ट होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट, D-tuberculin उसमें यूज होता है. थर्ड टेस्ट इज नथिंग बट द दिस टेस्ट, NR एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा मसल बायोप्सी. मसल का बायोप्सी करके उसमें एंटी-नॉर है ना, है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज, एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज है ना, एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज वो ज़्यादा पाया जाता है उसमें. एंड वो दैट इज अ मोर रिलायबल टेस्ट इन अ प्लाज्मा इन अ मसल बायोप्सी. उसका मसल myasthenia gravis वाले एक पेशेंट का निकाल के उसमें एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज पाया जाता है. अगर है तो मतलब पर्सन सफरिंग फ्रॉम myasthenia gravis. तो थर्ड टेस्ट इज अ मोर रिलायबल. नाउ फर्दर ट्रीटमेंट विद है ना, जो myasthenia gravis है उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं नियोस्टिग्मिन. तो फर्दर ट्रीटमेंट विद नियोस्टिग्मिन व्हिच हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, टॉलरेंस एंड वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मसल स्ट्रेन है ना. वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मसल स्ट्रेन इज द एडवर्स इफेक्ट. तो फर्दर myasthenia gravis के लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए तो है अमेलोरेटिव टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट, और ये तीसरा बाद में ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन है ना, अमोनियम, गैलेंटामाइन, ये सब ड्रग है, डोनेपेजिन. वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मसल स्ट्रेन इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस नियोस्टिग्मिन. तो ड्रग विद लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एंड लेस साइड इफेक्ट है ना. तो ड्रग विद लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लेस साइड इफेक्ट, फॉर एग्जांपल पिरिडोस्टिग्मिन
अमोनियम आर यूज्ड अलोन और इन द कॉम्बिनेशन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है प्रेडनिसोलोन वगैरह, दे आर आल्सो यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस, है ना. मतलब नियोस्टिगमिन थोड़ा सा, नियोस्टिगमिन का एक एडवर्स इफेक्ट है, दैट इज वैक्सिंग एंड मैनिंग विद द मसल स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाई pyridostigmine ammonium that can be used. Many drug which has a adverse effect that they can aggravate the symptoms of myasthenia gravis. मतलब there are some drugs, कुछ drugs है, those drugs can also produce myasthenia gravis. कुछ ड्रग है जो myasthenia gravis भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ना ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म. Likewise that some drugs are there which can cause myasthenia gravis or which can increase the symptoms of myasthenia gravis. These are nothing but the, for example, these are the example of drug which induces the myasthenia gravis. पहला एंटीबायोटिक जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड से है ना, पॉलीमिक्सिन, नॉरफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स दे कैन इंड्यूस द myasthenia gravis symptoms. Some anti-arrhythmic drug like procainamide, some anti-arrhythmic drug like procainamide, phenidine, lignocaine, propranolol, they can also induce the myasthenic symptoms. CNS depressant drugs, they can induce the myasthenic symptoms. जैसे मिसलिनियस में भी कुछ ड्रग है, क्लोरफोमाजिन, लिथियम, थायराइड हार्मोन्स, ट्यूबरक्युलिन, निटोइन, पेनिसिलामिन, दे कैन इंड्यूस द माइस्थेनिया सिम्टम्स. तो देखो नेक्स्ट है आपका, है ना, व्हाट इज द एक्शन ऑफ नियोस्टिगमिन, pyridostigmine ऑन जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट. नियोस्टिगमिन एंड बेंजपाइरेनियम is used post operative paralytic ileus urine retention. These drug neostigmine and benzpyrenium that can be used in the post operative paralytic ileus and urine retention. नेक्स्ट होता है स्नेक वेनम पॉइजनिंग. स्नेक वेनम पॉइजनिंग मतलब कोबरा बाइट, कोबरा बाइट है ना, कार्य करता है कोबरा बाइट, काट लिया आपको तो क्या यूज करना है. सो एंटीकोलिनस्टेरॉइड्स दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिक एशियन कोबरा बाइट. न्यूरोटॉक्सिक एशियन कोबरा, आपको अगर कोबरा ने बाइट किया, आपको नहीं करते वैसे, क्यों करेंगे आपको, क्योंकि आप तो सिटी में रहते हो, आपने कोबरा देखा भी नहीं होगा. अगर देखा भी होगा तो कहाँ पे देखा है, रील्स में देखा है. आपको चैलेंज नहीं ना, आपको और कोबरा का संबंध ही नहीं ना. कोबरा कहाँ पे आता है, खेतों में आता है, तो खेतों में आपका क्या संबंध है. स्नेक वेनम पॉइजनिंग. सो एंटीकोलिनस्टेरॉइड्स आर यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एशियन कोबरा. तो पैथोलॉजिकल पैरालिसिस ऑफ कोबरा बाइट इज सिमिलर टू द माइस्थेनिया ग्रेविस. मतलब जब सांप काटने की वजह से जो न्यूरोमस्कुलर के ऊपर एक्ट होते हैं ना सांप, देर आर टू टाइप ऑफ स्नेक. ओके, सो टू टाइप ऑफ स्नेक, सो टू टाइप ऑफ स्नेक वेनम, है ना. सांप का जो जहर होता है वो दो टाइप का होता है, तो बेस्ड ऑन दैट दो टाइप के सांप होते हैं. सो दोज स्नेक हैविंग न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन और न्यूरोटॉक्सिक वेनम एंड स्नेक हैविंग हीमोटॉक्सिक वेनम. तो कुछ जो सांप होते हैं उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, मतलब वो आपके मसल का पैरालिसिस करेगा एंड नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा. तो सम स्नेक्स आर हैविंग न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, so that will damage your nervous system and paralyze your muscles, like your myasthenia gravis के symptoms जैसे वैसे paralysis होता है. Then second type of snakes are there. कुछ सांप ऐसे होते हैं जिसमें जो टॉक्सिक होता है, जिसमें जो वेनम होता है, that is hemolytic venom. मतलब क्या, वो ब्लड का ब्रेकडाउन करते हैं. So there are two type of venom in the snakes. So some snakes are having neurotoxic venom, some snakes are having hematotoxic venom. So anticholinergics are useful in the treatment of the Asian cobra venom, which affect on a nervous system and causes the muscle paralysis as that of the myasthenia gravis. So atropine and entrophonium, they are used in the treatment of Asian cobra bite. Third, belladonna poisoning. So physostgmine is a specific antidote for poisoning with the belladonna. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. तो physostgmine is a antidote for atropine poisoning or belladonna poisoning. Then curare poisoning में curare poisoning entrophonium is used. In case of curare poisoning, entrophonium is used to antagonize the curare induced paralysis of muscle. Alzheimer disease में, in case of Alzheimer disease, Alzheimer में क्या होता है, decreased cholinergic neuron. So rivastigmine in Alzheimer's
Physostgmine and other reversible anticholinergics like donepezil, galantamine, they are used in the Alzheimer's disease. देखो एक समरी इसका क्या है कि रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेस they are used in the myasthenia gravis, they are used in the paralytic ileus, they are used in the snake venom poisoning, they are used in the Paradoma poisoning, they are used in the Curative poisoning, they are used in the Alzheimer's disease. ठीक है, ये सब उनके यूजेस हैं. Now irreversible anticholinesterase, irreversible anticholinesterase, so they are nothing but the organophosphate compound. ये क्या है? organophosphate compound है. और pesticides है, pesticides, they are known as the pesticides. They inhibit the acetylcholinesterase irreversibly. So इसमें क्या है? They are absolutely, है ना, they are highly lipid soluble drug. देखो जो स्प्रे करता है, जैसे किसान है, किसान अगर आपके क्रॉप ना, सपोज एनी फार्मर इज स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ऑन हिज क्रॉप, so sometimes because of the opposite wind direction, so that insecticide comes on the body of farmer, and as these insecticides organophosphate, they are highly lipid soluble, they are easily get absorbed from the skin, they can cross the blood brain barrier, that's why poisoning occurs. Okay? So classification of this irreversible anticholinesterase, they inhibit the cholinesterase enzyme irreversibly, irreversible anticholinesterase. So they are classified as some of them are therapeutically useful. Say for example ecothiopate, metryptonate, diazopyl fluorophosphate. So ecothiopate is used topically in the eyes, the glaucoma, है ना. metryptonate can be used topically, है ना. diazopyl fluorophosphate ये यूज किए जाते हैं. Now pure insecticides, for example फेनथायोन, मेलाथायोन, टेराथायोन एंड मोनोक्रोटोफॉस, ये तो प्योर क्या है? इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने के लिए. देन हाईली टॉक्सिक नर्व गैसेस, हाईली टॉक्सिक नर्व गैस, ताबून, सारिन, सोमन, दे आर द नर्व गैसेस. जैसे आपका हिटलर होता है, हिटलर ने क्या किया था? सो ही वाज यूजिंग नर्व गैसेस फॉर केमिकल वॉरफेयर. नाउ थेरापेटिक यूजेस इनके क्या है? इनके यूज थोड़े से लिमिटेड है, दे हैव लिमिटेड थेरापेटिक यूजेस. फॉर एग्जांपल ग्लाउकोमा में यूज कर सकते हो इकोथायोपेट. वर्म इन्फेक्शन में मेट्रिफोनेट यूज कर सकते हो. मेट्रिफोनेट इज यूज्ड इन द वर्म इन्फेक्शन टू रिमूव द वर्म्स फ्रॉम इंटेस्टाइन. ये है. और बाकी क्या है कि मेट्रिफोनेट कैन बी यूज्ड एज अ एंथालमेंटिक, मेट्रिफोनेट कैन बी यूज्ड एज अ एंथालमेंटिक. तो इसके बाद में अपन उसका पॉइजनिंग देखेंगे और उसके बाद में स्टॉप करेंगे. They can be used in a glaucoma, ecothiopate, worm infection, triclophos, and they are anthelmintic, right? Now next is a very important, very important point, organophosphate poisoning. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. Organophosphate poisoning, they are the irreversible inhibitor of cholinesterase and organophosphate or insecticide poisoning. ये क्यों होता है इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? तो पॉइजनिंग में भी ड्यू टू द डिफरेंट रीजन. जैसे पॉइजनिंग में भी बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल, तो पर्सन एंगेज्ड इन द स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप. जैसे खेतों में जो किसान होता है, स्प्रे करता है पेस्टिसाइड्स उनके क्रॉप के ऊपर. सो समटाइम दैट कम्स एक्सीडेंटली ऑन अ बॉडी ऑफ फार्मर. सो ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग. So poisoning of insecticide because of the maybe because of the first occupational poisoning, second accidental poisoning. आपको मालूम ही नहीं, एक एम्प्टी बॉटल है, उसमें क्या रखा है, आपके दुश्मन ने क्या किया, एम्प्टी बॉटल में आपके खांसी की दवा है और उसमें उसने पेस्टिसाइड भर दिया. सो एक्सीडेंटली, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंटली कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, so that is nothing but the accidental poisoning. Third one is a suicidal poisoning.
suicidal poisoning. So if you want to commit a suicide and if you are ingesting these pesticides, तो suicidal poisoning है ना. तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग क्यों होता है? तो पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस insecticides may be because of the three reasons. First reason is a occupational, second one is accidental, third one is a suicidal, right? Now symptoms of poisoning, ये क्या है? They are the irreversible inhibitor of anticholinesterase. They are the irreversible inhibitor of cholinesterase. Cholinesterase एंजाइम को इनहिबिट करते हैं irreversibly. मतलब क्या करते हैं? एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ाते हैं. जो भी एसिटिलकोलिन की एक्शन है वही यहाँ पे आएंगे. तो व्हाट आर द सिम्टम्स? मस्कर्निक सिम्टम्स आर नथिंग बट द मायोसिस. तो मायोसिस मतलब क्या? आपका पिपल साइज क्या होगा? कम होगा. तो सिम्टम्स आर नथिंग बट द मायोसिस. स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, देन ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज्ड ब्रोंकियल सिक्रेशन. है ना. एसिटिलकोलिन क्या करता है? सिक्रेशन बढ़ता है ना. सेंस ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया. नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन. निकोटिनिक एक्शन क्या रहेंगे? निकोटिनिक एक्शन तो फैसिकुलेशंस, मतलब मसल के फैसिकुलेशंस, twitching, generalized weakness, depolarizing type of paralysis of muscle. either हार्ट में either टैकिकार्डिया होगा या ब्रैडिकार्डिया होगा. These are the symptoms. CNS के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सेंट्रल सिम्टम्स. सो एंजाइटी होगा, कंफ्यूजन, एटेक्सिया, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वर्जेंस, कोमा एंड डेथ में ऑकर्स ड्यू टू द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट. तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट क्या है? डीएफपी एंड मिपापॉक्स. ये क्या है? ये पेस्टिसाइड्स है. डीएफपी एंड मिपापॉक्स दे प्रोड्यूसेस द डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व. माइलिन शीथ खराब कर देंगे. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट. इनके अगर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आ गए तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना. अडल्ट्रेशन ऑफ ओलिव ऑयल, जो ओलिव ऑयल होता है ना आपका, so adulteration of olive oil with the lubricating oil containing triorthocrysyl phosphate. Sometimes olive oil is adulterated with the lubricating oil which has a triorthocrysyl phosphate, which caused the thousands of death in the North Africa, known as a North African tragedy. North African tragedy. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग के सिम्टम्स है, राइट. That is due to the block, that is due to muscarinic effect, nicotinic effect, central effect, neurotoxic effect, है ना. राइट. नाउ पॉइजनिंग हो गया तो उसके बाद में क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. तो व्हाट यू कैन डू? आपने अगर पेस्टिसाइड खा लिया, if pesticide is there in the stomach, so what you can do? You can remove that pesticide from stomach, unabsorbed pesticide from stomach. How? By washing your stomach, known as a rapid gastric lavage. By washing your stomach, known as a rapid gastric lavage. देखो है ना, मराठीमध्ये बघा इंदुरीकर महाराज कीर्तनामध्ये सांगतात, काय सांगतात? एकाने जर कोणी जर औषध घेतलं, त्याला देऊन बघा एकदा औषध, ते परत देतच नाही का? की दवाखान्यात उलट लटकी आणि आतून नळ्या घालते. रैपिड गैस्ट्रिक लैवेज है ना, टू क्लियर द सिक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड फैरिंग्स लैरिंग्स. मतलब नाप में जो गले में जो सिक्रेशन बढ़ा है बिकॉज ऑफ द एसिटिलकोलिन, तो क्लियर दैट सिक्रेशन. एंडोट्रैकियल इंटुबेशन इज इम्पोर्टेंट. सांस लेने में दिक्कत हो रही तो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करना है. माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं करना है. यू हैव टू अवॉइड माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. नहीं तो फिर क्या है, आजकल क्या है कि आजकल एक फैशन बन गया है, किसी को भी हेल्प करो. लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा है. माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन शुड बी अवॉइडेड. अगर कोई पॉइजनिंग का केस है, इफ यू डोंट नो पॉइजनिंग क्यों हुआ है, सो यू शुड नॉट गिव दैट पर्सन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि आपको भी पॉइजनिंग हो सकता है ना. सो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन शुड बी अवॉइडेड. शुड बी mouth to mouth respiration should not be given, should be avoided, you know, in this case. In IV fluids they are introduced and nursing care is important. Then specific antidote क्या है इसका? Specific antidote is very very important. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. What is the specific antidote for organophosphat poisoning? बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार.
specific antidote for organophosphate poisoning. Specific antidote for organophosphate poisoning known as a pralidoxime. Known as a pralidoxime. तो ये क्या है? Specific antidote है. So specific antidote for organophosphate poisoning, pralidoxime, also known as a 2-PARM. 2-PARM. So it is a cholinesterase activator. ये क्या है? It is a cholinesterase activator. क्यों एक्टिवेट करना है? क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ने क्या किया है? Organophosphat, what are they? They are the irreversible inhibitor of organophosphate are irreversible inhibitor of cholinesterase. So you have to activate that enzyme again. So pralidoxime is used, and atropine is also used. Atropine should not be used in the patient with cyanosis. अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें नहीं. तो स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है? फिर pralidoxime. Atropine is antidote of choice for both organophosphate poisoning as well as carbamate poisoning. ठीक है, देखो, तो pralidoxime is antidote for organophosphate poisoning, not for carbamate poisoning. तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना पेस्टिसाइड्स. Pesticides are of 2 type. So some are the organophosphate derivative, some are the carbamic acid derivative. So those carbamate pesticides जो है, in that case pralidoxime is ineffective. So pralidoxime is the only antidote for organophosphate poisoning. अगर organophosphate का poisoning है, so in that case pralidoxime is the antidote. But in case of carbamate poisoning, so you have to use atropine. Now क्या है ये pralidoxime? What is a pralidoxime? So pralidoxime is nothing but the oxime. Pralidoxime is a oxime derivative. Oximes are the cholinesterase reactivator. The irreversible inhibition of cholinesterase by the organophosphate compound, जो organophosphate जो pesticides है, they irreversibly inhibit the cholinesterase, which is due to the phosphorylation of static site. क्यों करता है? क्योंकि ये phosphorylate करते हैं, आपने देखा है. तो organophosphate they will cause phosphorylation of enzyme at the static site. Now oximes क्या करते हैं? Oximes और pralidoxime or oximes, they combines with the phosphorylated groups. They combines with the phosphorylated groups of these phosphorylatory static site and forms a soluble complex, and that's why oximes are the cholinesterase reactivator. Pralidoxime or 2-PARM. So this result in the setting a free static site and reactivation of enzyme. So they are effective in the reversing the neuromuscular paralysis caused by these organophosphate compounds. Atropine is ineffective. ठीक है, तो देखो what is a pralidoxime? इसका IUPAC नेम देखो, pyridine 2-aldoxamine chloride. Pyridine 2-aldoxamine chloride, pyridine 2-aldoxamine chloride, known as a 2-PARM. Another is also there, known as a diacetyl monoamine, known as a DAM. PARM and DAM है ना. PARM मतलब क्या? pyridine 2-aldoxamine, that is also cholinesterase reactivator. और दूसरा कौन सा है? DAM. DAM मतलब क्या है? diacetyl monoxamine. तो कभी कभी क्या है कि आपको कंफ्यूज करते हैं. तो व्हाट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? आपको फटक से याद आता है. क्या याद आता है आपको? pralidoxime. आपको याद आता है ये pralidoxime. बट pralidoxime ऑप्शन में देते ही नहीं, तो ऑप्शन में देते आपको diacetyl monoxamine और DAM. तो रिमेंबर एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, pralidoxime और diacetyl monoxamine. PARM और DAM both are the antidote. ठीक है, for organophosphate. For carbamate poisoning, atropine is used, and for both atropine is the drug of choice. ठीक है, so you can see over here the symptoms and all that, है ना. So you may die with your own poison. काय म्हणते ते बघा, ते काय म्हणते? You may die with your own poison. म्हणजे काय? So the farmer is spraying the pesticide on the crop to kill this pest. Good night, Bankar.
This farmer is spraying the pesticide to kill the pest on a crop, but what happens sometimes अगर ये spray, if the spray comes on the body of farmer, they are nothing but the organophosphate compound, insecticide or pesticide. So they are highly lipid soluble, they get easily absorbed in the through the skin and causes the poisoning, organophosphate poisoning, है ना. तो organophosphate क्या होता है, they are nothing but the acetylcholinesterase inhibitor or anticholinesterase. So increases the acetyl, है ना, increases the acetylcholine in the synaptic cleft, है ना. They are the irreversible inhibitor of acetylcholinesterase. That's why more acetylcholine will be available. That's why overstimulation of acetylcholine receptor, and that causes the sign and symptoms. Sign and symptoms से poisoning के. So sign and symptoms of poisoning. And antidote क्या है फिर? Antidote is nothing but the pralidoxine, right? Pralidoxine. So tomorrow we'll see the parasympatholytics. तो अभी यहाँ पे क्या है, आपका sympathomimetics खत्म हो चुका है. So here sympathomimetics is completed. Tomorrow we'll see the parasympatholytics. So atropine and other drugs we'll see tomorrow. बहुत बड़ा चैप्टर है ये, right? So I hope you might have understood. समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आज अपन ने जो organophospate poisoning देखा है वो important part है ना. Pharmacological actions and uses of रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंटीकोलिनेस्टरेज, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. सो है ना, मेरा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज बी प्रेजेंट इन द लेक्चर, बिकॉज जो लेक्चर में मैं बोलता हूँ आपने ना कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा. ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसमें, इसलिए मैं आपको पढ़ता हूँ. हाँ, वो अलग दिक्कत है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा नहीं सकता. अगर मैं पढ़ा सकता ना तो फिर बाकी क्लासेस बंद हो जाते. सो अगर मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ा सकता था तो बाकी क्लासेस बंद हो जाते आज. तो है ना, आप ये मत समझो इट्स नॉट यूजफुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वर्थ ऑफ योर एवरी पेनी. आपने जो पैसे दिए है उसका हर एक रुपए की वर्थ ऑफ ही. तो बी प्रेजेंट इन द लेक्चर. ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो. मैंने टेस्ट अपडेट किया है आज, ड्रग एक्टिंग ऑन सीनियर्स पार्ट 2. एवरीबडी गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट. ठीक है.